Namaste ji, namaste. So the 127th Constitution Amendment Bill has been passed in the Lok Sabha. अगर राज्य सभा पास कर देगी, it will become the 105th constitutional amendment. So don't get confused between 127th and the 105th. Why so? Because up till now there have been 104 amendments, so this one will just become the 105th. Then what is this 127th? 127 is the bill का number है, ठीक है जी. So it's just yet to be passed by Rajya Sabha, but even there is pretty much there will be no opposition. Now once you go through the objects and reasons, everything will start to make sense to you, but you will have to keep in mind a judgment which recently came out, also known as the Maratha Reservation Judgement, sometimes referred to as Dr. Jayashree Lakshman Rao Patil versus the Chief Minister. चीफ मिनिस्टर कहाँ के? महाराष्ट्र के ही होंगे, बिकॉज इट रिलेट्स टू द मराठा रिजर्वेशन. अब अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसा बिल समझना हो, द मोस्ट क्रूशल थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस. So it starts with the Constitution 102nd Amendment. The first and foremost, the 105th, which it will soon become, is related to the 102nd Amendment. Question number 1. Question number 2, 2018. Year becomes important for our high-level judiciary LLM entrances. Has inserted 3 new articles. So the 102nd one inserted these 3 new articles. That is also one more MCQ. See how many MCQs can you just derive out of objects and reasons. Whereas Article 338B has constituted the National Commission for Backward Classes. Now this forever remains one of the articles that you will have to rote learn as long as you're preparing for polity for any exam. Article 342A has dealt with the central list of social and educationally backward classes, commonly known as OBCs. So OBCs are also known as social and educationally backward classes. Dealt with where 342A and defined where Article 366, Clause 26C. It has defined the socially and educationally backward classes. All right. So this was the 102nd Amendment, touched on these aspects. We are yet to come on why are we doing this, or rather why are we passing this bill, and why will we eventually complete the 105th Constitutional Amendment, because the Supreme Court by a 3:2 judgment said that President alone is empowered to do what? To decide the social and educational backward classes list, and states have no power. So 3 judges ruled in favor, 2 against this. So therefore now the Sarkar has said, चलो जी मुसीबत ही ख़त्म करते हैं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी या उलझन ही नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं, इतनी प्रॉब्लम ही क्या है, इतनी लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही क्या है. Now see the keyword, the legislative intent. So if you're writing a UPSC mains का answer regarding this, use words such as this. At the time of passing the Constitution 102nd Amendment Act was that it deals with the central list of social and educationally backward classes, SEBCs. तो एक जो प्रश्न उठाया गया था इस केस में, just one aspect, कि जी ये बताइएगा, after the 102nd Amendment, do states have any powers to deal with SEBCs? मतलब can they make their own list? So the Supreme Court by 3:2 judgment said no, only the president. So basically only the central government. तो ये अब कह रहे हैं कि जी ऐसा है. 2018 से पहले भी ये तो बात सही थी कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज आर हैविंग देयर ओन स्टेट लिस्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ ओबीसीज. लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूजन में आ गए हैं आफ्टर द 102nd अमेंडमेंट, और उस कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया है इस जजमेंट के अंदर बाय एक्चुअली रूलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो ठीक है, वो कह रहे हैं जी कोई बात नहीं, वी विल जस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स एज सिंपल एज दैट. Although since 1993 there always existed separate lists of the central government and that of the state governments and union territories, a question has arisen after enactment of the Constitution 102nd Amendment Act. So in effect this question was decided by the Supreme Court by this decision, जिसको हम अब overturn करने जा रहे हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपको हमने क्या काम करा है कि आपके स्टेट्स की पावर हमने ख़त्म कर दी है. मतलब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद की कह रहे हैं कि स्टेट के पास ऐसी कोई लिस्ट बनाने की पावर ही नहीं है. सो वो कह रहे हैं जी, इन ऑर्डर टू एडिक्वेटली क्लैरिफाई द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर एम्पावर्ड, वी आर गोइंग टू डू व्हाट? वी विल
amend 342A, we will amend 338B, we will amend 366 of the Constitution. The bill seeks to achieve the above objectives, and why? To maintain the federal structure. Make a note of each and every one of these things. तो अब आ रहे हैं, originally 342A stands after the 102nd Amendment. How does it stand, or what does it do basically? The president may, with respect to any state or union territory where it is a state, after consultation with the governor, तो president ही काम करेंगे, but लेकिन अगर state की list है तो governor के पास है, public notification specify the socially and educationally backward classes. तो इससे ये प्रश्न उठा था कि जी ये 3:2 के अंदर यही प्रश्न था कि ये अब 342 के A के आने के बाद क्या स्टेट के पास पावर है टू डिफाइन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रेसिडेंट अलोन इज एम्पावर्ड। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि चलो जी कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। अब क्या कर रही है ये अमेंडमेंट, ये ओरिजिनल मैंने आपको दिखाया, अब ये जो अमेंडमेंट काम कर रही है, इट्स बेसिकली सेइंग कि 338B में बेटा एक काम करो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द पर्पस ऑफ क्लॉज 3 ऑफ 342A। अब 342A के अंदर क्या हो रहा है, वो कह रहे जी जो क्लॉज 1 है, फॉर वर्ड्स द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जगह द वर्ड्स द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन सेंट्रल लिस्ट विच शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने एक्सप्लिसिट कर दी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लिसिट कर दी तो स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सप्लिसिट कर देंगे। ये देख लीजिए, एंट्रीज इन विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट। तो ये चीज़ें अमेंडमेंट कर रहे हैं और इसको ज़्यादा ऑपोजिशन आएगी भी नहीं, बिकॉज इवन स्टेट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 366। तो ये डेफिनेशन भी चेंज कर देंगे। क्लॉज 26C ये आपके ये वाले जो आर्टिकल, प्लीज़ ये वाला जो काम हो रहा है ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। Socially and educational backward classes means such backward classes are so deemed under 342A for the purpose of central government or the state or union territory as the case may be। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आप इतने क्यों कंफ्यूजन में हो। लो, जिन आर्टिकल्स को लेके आप ये डिसीजन और आपने जो जजमेंट दी है हमने, वो आपकी कंफ्यूजन ही क्लियर कर दी। ये देख लीजिएगा, इन ऑर्डर टू एडिक्वेटली clarify and that question which arose, we are trying to nullify that question alone and basically आपके, तो इसलिए केस लॉ का नाम इम्पोर्टेंट हो गया। सारी आपको मैंने कहानी बता दी है यहाँ पे। The 105th Amendment, also known as the 127th Constitutional Amendment Bill, that should cover out pretty much everything. This is a new style of video that we are trying out, new style of lecture actually, and hopefully it works. All right, wishing you all the very best. Take care. Bye.